Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medico's Maharathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss mixed bag questions of anatomy Neetpg 2014 to 2021. Okay, so आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कुछ मिक्स बैग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। किसके? एनाटॉमी के। एग्जाम कौन सा है? नीट से ईयर कौन सा है? 2014 से 2021 के बीच के कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस क्या है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस सेशन को यू कैन आल्सो से इट एज इमेज वाली एनाटॉमी। ओके, इमेज वाले क्वेश्चंस एनाटॉमी के। सो इमेज वाली एनाटॉमी का डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन आई वांट टू से दैट if you are new to my channel then do subscribe to my channel and don't forget to press on notification bell icon so that you not miss any update upcoming in future. Okay, question number 1, here we go. Which among the following is branch from trunk of brachial plexus? And examiner given you 4 options and one option is correct here. You have to choose that correct option. So my dear friends, which option will be correct choice? Which branch will be correct choice? Okay, so my dear friends, the correct answer for this question will be option number A and D, suprascapular nerve. Okay, suprascapular nerve and nerve to subclavius, both these nerve will pass from trunk of the brachial plexus. Okay, both these nerve will branch from trunk of brachial plexus. Which trunk? Superior trunk, upper trunk. Okay, so brachial plexus का जो upper trunk होगा, जो superior trunk होगा, वहां से दो nerves arise होंगी। उनका नाम क्या है? suprascapular nerve है और nerve to subclavius है। Here we go with a image for this question. Okay, so ये एक image है यहाँ पर, ठीक है। Okay, so this area is superior. Okay, this area is superior trunk. This area is medial trunk and this area is inferior trunk or lower trunk. Okay, here you can see lateral cord, posterior cord. Okay, 3 cords are present, but our question is not to discuss about cord. Our question is to discuss about the origin, about the branch of nerves which are arising from trunk. Okay, so here you can see, let's mark the trunk region. Okay, 1 minute, लेट्स मार्क अवर ट्रंक रीजन। ओके, सो हमने क्या है, ट्रंक रीजन को मार्क कर दिया। अब अपने को बताना है कि क्या नर्व्स यहाँ से अराइज हुई है। सो दिस नर्व एंड दिस नर्व, सो दिस बोथ नर्व्स, हियर यू कैन सी दैट नर्व इज नेम्ड एज nerve to subclavius. Okay, इस नर्व का नाम क्या है? nerve to subclavius. Here you can see this nerve is named as nerve to subclavius and this nerve is named as suprascapular nerve. So दो नर्व राइज हो रही है सुपीरियर ट्रंक से, उनका नाम क्या है? suprascapular nerve and nerve to subclavius. सो इमेज से क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। ओके, एक इमेज हो रहा है इसकी। ओके, लेट्स सी अनदर इमेज। हियर यू कैन सी the same material is available here, but what you need to do, just sit for 1 minute, okay, and read this image completely. Okay, mark the region. Okay, this is a root region, this is a trunk region. Okay, so you need to mark the regions. This is trunk region. Okay, you can see, and then memorize the complete brachial plexus. कौन सी नर्व कहाँ से अराइज हो रही है, ठीक है, कितने कोड्स हैं, कितने ट्रंक हैं, ठीक है, रूट वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। सो यू विल टेक approximately 5 minutes to complete revise brachial plexus. Okay, in a easy image pattern. What is our next question? Before going to next question, we have little theory detail. Some students are fond of theory for any particular question, so here we go for theory. There are only 2 branches which arise from trunk of brachial plexus and those are suprascapular nerve and nerve to subclavius muscle. Okay, so 2 branches हैं, उनका नाम हमने बता दिया है, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है? फर्स्ट थिंग यू मस्ट टू रिमेंबर द ओरिजिन ऑफ दैट मसल, सेकंड थिंग यू मस्ट रिमेंबर द इनर्वेशन फॉर दैट nerve. Okay, so suprascapular nerve, it is originating from superior trunk. Okay, and the nerve of subclavius, it will also origin from superior trunk of brachial plexus. So origin क्या है? superior trunk है, C5 C6 है, ठीक है। इनर्वेशन क्या है? suprascapular की इनर्वेशन है
it will innervate supraspinatus and infraspinatus muscle. Okay, and the subclavius will innervate the subclavius muscle. Okay, so nerve to subclavius थी वो किसको इनर्वेट कर रही है, सबक्लेवियस मसल को. सो इसमें जो रिमेंबर, जो याद रखने की चीज है वो ये है. ठीक है. ओके, एंड इफ एग्जामिनर इज आस्किंग दैट suprascapular nerve will pass laterally through which triangle, then you will say posterior triangle of neck through the suprascapular foramen. अगर foramen का नाम पूछ ले तो क्या बोलेंगे, suprascapular foramen to enter posterior scapular regions. ओके, सो ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है. ठीक है. ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Here we go. Which of the following passes through foramen magnum? Examiner give you four options. चार ऑप्शंस है, एक कोई करेक्ट चॉइस है. सो माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओके, वर्टिब्रल आर्टरी passes through foramen magnum. ओके, वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो जो रीजन जो होगा किसका, फोरामेन मैग्नम का, उससे पास करेगी. ठीक है. ओके, सो जो फोरामेन मैग्नम का रीजन जनरली होगा लाइक दिस. यू कैन सी लिटिल बिट इमेज आफ्टर दिस माय डिटेल थ्योरी. ओके, सो द vertebral artery will generally pass from this foramen magnum region. Okay, which is foramen magnum region? If you want to mark the region, this below region will be foramen magnum. Okay, and further it will form a artery that will be basilar artery. Okay, so इनकी जो एक combination होगा किसका, vertebral artery का, आगे वो एक common artery form करेगा, उसका नाम क्या होगा, basilar artery. So let's see this detail by an image. Here you go. Vertebral artery enter cranial cavity through foramen magnum. First point is clear. It unites filo of opposite side at lower border of bones to form basilar artery. So here you go. This lower region is foramen magnum. Okay, and the this above region is for pons. Okay, and in pons region at the lower border the vertebral artery will unite and form basilar artery. So here you can see in this image. Okay, so question number 2 भी क्या है, क्लियर हो चुका है. एक इमेज 4 है इससे रिलेटेड, वो भी देख लो. ठीक है. इस इमेज में क्या है, हमको जो बोला गया है वो क्या है, रीजन कौन सा है, फोरामेन मैग्नम रीजन को मार्क करना है. वो रीजन ये रहा. ओके, इफ यू मार्क इट, इट इज foramen magnum. Okay, and here you go for vertebral artery. So vertebral artery is entering to foramen magnum like this. Okay, so ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है. What is our next question? About Simpson fascia which is incorrect. Okay, so you have to tell incorrect statement regarding Simpson fascia. Correct नहीं, incorrect. Incorrect statement जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए. ओके, इट इज अटैच टू इनर बॉर्डर ऑफ सेकंड रिब. जो ये सेकंड वर्ड यूज हुआ है यही रॉन्ग है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है. सब स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. जनरली सिप्सन फेशिया इट इज अटैच टू इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. ओके, कौन से रिब के इनर बॉर्डर से अटैच होगा, फर्स्ट रिब के. ओके, ना कि सेकंड रिब से. तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, इनकरेक्ट है. बाकी सब कुछ क्या है, करेक्ट है. इट कवर्स एपिकल पार्ट ऑफ लंग, यस. Part of slanus anterior muscle, yes. Vessel pass above the fascia, yes. And here you go for little detail for this. So here we have two images for Simpson fascia. You can say that Simpson fascia is also named as subpleural membrane. Okay, it is also named as subpleural membrane, and it will attach to internal border of first rib. ओके, जो फर्स्ट रिब का जो इंटरनल बॉर्डर होगा उसको अटैच करेगा. ठीक है. एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा, जो C7 वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा उसको अटैच करेगा. सो इसकी अटैचमेंट क्या है, इंटरनल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा C7. ओके, सिप्सन फेशिया का दूसरा नाम क्या है, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन. ओके, and it is a strong fascicle connective tissue layer above the superior thoracic inlet on each side and placed on top of tips of the lungs. Means apex of lungs is covered by
सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन से क्या होगा, कवर्ड होगा टिप ऑफ लंग्स या फिर अपेक्स ऑफ लंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो क्लियर्ड। Let's see little more about it. Okay, another image for this. Okay, here you go for suprapleural membrane. So here you can see, if it is image given another image for suprapleural membrane, here you can see the internal border of first strip, and it will innervate to transverse process of C7. Okay, transverse process of C7 vertebra. Okay, what is our next question, means question number 4. Here you go for question number 4. The femoral ring is bounded by all of the following except। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो फिमोरल रिंग होगी उसकी बाउंड्रीज क्या है, एक एक्सेप्शन बताना है। ठीक है, सारी बाउंड्रीज है, एक नहीं है, वो कौन सी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, femoral artery, it is not a boundary of femoral ring। okay, it is not in boundary of femoral ring। femoral vein वहाँ है, inguinal ligament वहाँ है, lacunar ligament भी कहाँ है, present है बाउंड्रीज में। okay, so let's see a detail about it। Here you go. Femoral ring is bounded as follows. It is bounded anteriorly by inguinal ligament. Anteriorly किससे bound होगी? Inguinal ligament से. Posteriorly by pectineal ligament. Okay. And medially by crescentric base of lacunar ligament. Okay. And laterally by fibrous septum on medial side of femoral vein. Okay. Laterally किससे bounded है? Femoral vein से, लेकिन कहीं फीमोरल आर्टरी का जिक्र हुआ, कहीं फीमोरल आर्टरी है नहीं है, मतलब वो बाउंड्रीज में नहीं है। ओके, सो लेट्स सी इमेज फॉर दिस क्वेश्चन। हियर यू गो फॉर इमेज। ओके, so this yellow color is telling you that this is a femoral canal। okay, so yellow color का जो चीज है वो क्या है, femoral canal है। ग्रीन कलर में जो है सीन वो क्या है, इंग्विनल लिगामेंट है। ओके, सो ये ग्रीन कलर वाला क्या है, इंग्विनल लिगामेंट है। ये किसको कवर कर रहा है, femoral canal, या फिर यू कैन सी इट इज कवरिंग द femoral ring। okay, so this yellow color is femoral ring। okay, so let's me mark 1 minute। okay, so let's see here, you can see the yellow color। okay, so if I take a marker here of yellow color, 1 minute, here you go, so this yellow region here, so this yellow region here, it is a femoral canal and it is covered by, in green color you can see inguinal ligament, in blue color you can see pectinus and femoral vein, in orange color you can see lacunar ligament। okay, and in this image also you can see here that femoral canal, it is femoral canal। okay, and this one is femoral vein and this one is femoral artery। so femoral artery किसको कवर कर रही है, femoral vein को तो कवर कर रही है। ठीक है, बाउंड्रीज में है, लेकिन किसके बाउंड्री में नहीं है, femoral canal की बाउंड्री में नहीं है। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री में क्या नहीं है, femoral artery नहीं है, तो femoral artery के बीच में क्या है, femoral vein है। okay, so this question is also done। so let's move to next question। which nerve is required for gag reflex? you have to tell nerve which is required for gag reflex my dear friends। nerve required for gag reflex is option number A, ninth cranial nerve, generally required for gag reflex। let's see a little detail for this question। here we go। Gag reflex, it is also known as pharyngeal reflex or laryngeal spasm। it is a contraction of back of throat triggered by an object touching of the roof of your mouth and back of your tongue, the area around your tonsil or back of your throat। okay, the sensory limb is mediated predominantly by cranial nerve 9। okay, that is glossopharyngeal nerve, and motor limb by cranial nerve 10, that is vagus nerve। okay, so afferent nerve जो होगी गैग रिफ्लेक्स के लिए उसका नाम होगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इफरेंट नर्व जो होगी उसका नाम होगा वैगुस नर्व। ठीक है, एफरेंट का मतलब क्या है, सेंसरी एक्शन। इफरेंट का मतलब क्या है, मोटर एक्शन। ओके, सो जो प्रीडोमिनेंस जो यहाँ पर है वो किसकी है, क्रेनियल नर्व नंबर 9 इन सेंसरी एक्शन। ओके, so the correct answer for this question will be sensory
action is mediated by cranial nerve 9. So the correct answer for this question will be cranial nerve number 9. ओके, इन्वॉल्व दोनों होगी, लेकिन मोटर के अंदर क्या है, क्रेनियल 10 है, और प्रीडोमिनेंस जो होगी वो किसकी होगी, क्रेनियल 9 की होगी। ठीक है, किसमें, सेंसरी एक्शन में। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, here you go. Which vessel carries deoxygenated blood back to placenta in fetal circulation? And here answer is already given. It is generally done by umbilical artery. Okay, so umbilical artery, it is a vessel generally which carries deoxygenated blood back to placenta in fetal circulation. ठीक है, आर्टरी अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है फीटल सर्कुलेशन में प्लेसेंटा तक, तो जो अम्बिलिकल वेन होगी वो क्या कैरी करेगी, माय डियर फ्रेंड्स, अम्बिलिकल वेन विल कैरी प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अम्बिलिकल वेन क्या करेगी, प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अम्बिलिकल आर्टरी किसको कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, so it's our question number 7. A patient fell down from a bicycle and start having pain around hip joint. Okay, so इस patient को pain कहाँ पर हो रहा है, hip joint के around. Okay, and after feeling pain around hip joint, the patient is feeling shortening of limb, and attitude was flexion, abduction and medial rotation. Okay, so person is facing problem in three action with pain, flexion, abduction and medial rotation. Okay, so what is dislocation, or it is a fracture? Okay, if it is a fracture, then which fracture, transcervical fracture or fracture neck of femur? If it is dislocation, then it is anterior dislocation or posterior dislocation. My dear friends, correct answer for this question will be option number C. It is a posterior dislocation. It is a posterior dislocation, after which three actions are stopped: flexion, abduction and medial rotation. Okay, and here we go with an image. Okay, so हमारे पास इसकी क्या है, एक image है, let's see. So this is posterior dislocation. Here you can see it is properly located, but here you can see this cavity is empty, the bone is dislocated. Here you can see this joint is dislocated, and this dislocation is named as posterior dislocation. Here you go for same image. Okay, so this is named as posterior dislocation. Okay, so this is named as posterior dislocation. If examiner give you image, then you will easily locate this as posterior dislocation. What is our next question, here you go. Which nerve passes through marked foramen? So examiner is asking that which nerve is passing through this marked foramen. This is mandibular foramen. Okay, and examiner is asking the name of nerve. Okay, so if examiner is asking name of nerve, what will be the nerve which is passing through this? Okay, my dear friends, this nerve will be named as option number D, inferior alveolar nerve. Okay, inferior alveolar nerve. Here we go with image. Okay, let's see another image which will clear your doubt. Okay, so here you can see inferior alveolar nerve. It is passing through this region, and this portion is mandible foramen. Okay, so here you go again with another cadaveric image. Here you can see this is inferior alveolar nerve. Okay, and examiner marked the same region. Here you go with inferior alveolar nerve. Okay, so this nerve examiner asked you the same question कि ये जो नर्व है जो मैंने मार्क की है उसका नाम क्या है, उसका नाम है inferior alveolar nerve. Okay, so my dear friends, this is our discussion regarding mixed bag questions of anatomy Neetpg 2014 to 2021. Okay, so if you are interested to watch more videos regarding anatomy questions, then you can go to my playlist quiz time, or you can also visit my playlist anatomy. I will give you link in description for both playlist. There you will get image based discussion. There you will also get previous year question discussion of especially 2018 to 2020 of NEET PG. Okay, complete
set of quiz questions will be available in those videos. Okay, so my dear friends, thanks to everyone. Stay safe, stay healthy, and don't forget to like this video, share this video, and subscribe to my channel for more updates. Okay.